Okay, so how many of you went through the notes or recordings of the last class? कितने लोगों ने लास्ट क्लास का नोट या रिकॉर्डिंग देख लिया? प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. Okay. So if you have any questions related to the last class, or if you have any questions related to the present class also, then after the class you can ask any question. Okay. So now, was my speed that I was going with yesterday was all right for you? Yes. Did you understand everything, whatever I taught you? Okay, good. So today we would be moving forward with our discussions. And if I ask you a few questions so that I may understand that you have studied the previous class well, can you tell me that which bond is a strong bond? Can you give me an example of a strong bond? Strong bond कौन सा होता है? Just type it out. Just type it out. Yeah. Covalent bond, phosphodiester bond, glycosidic bond, all of them are strong bonds. Good. So, कल के class में, in yesterday's class, we had also discussed about a weak bond. Can you tell me the name of that weak bond? Ionic bond. Very good. Good. Ionic bond. Acha. Can you tell me that? Yes. So, uh, can you tell me which bond involves complete transfer of electrons? Which bond involves complete transfer of electrons? Is ionic bond. Very good. Can you tell me that water is an example of polar covalent or non-polar covalent bond? You can write PC or NPC, polar covalent or non-polar covalent. Okay, polar covalent bond. Good. So now I am able to understand that you guys have read the previous lecture. Good. Now today we would be starting to talk about the other weak bonds. I'm sharing up my screen, and once you are able to view it, just confirm. So guys, is my screen visible to all of you? Just confirm. Good, good. So now let us quickly start with other bonds. In yesterday's lecture, we had started weak bond, and in the weak bond, I had told you about the ionic bond. I said that ionic bond is a strong bond when you are talking about it in chemistry, but we call it as a weak bond in biochemistry. Why? Because in biochemistry, we are talking about the situations inside the cell. सेल के अंदर की situations के बारे में बात करते हैं. And because cell has mostly water inside aqueous environment, ionic bonds will be weak bonds. So we have finished off talking about the ionic bond. कल के लेक्चर में ionic bond खत्म हो चुका है. आज के लेक्चर से in today's lecture we have to start with the second type of weak bond, that is हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आज से बातचीत करना शुरू करने वाले हैं हम लोग. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट अ मिनट. Yeah. So today we are starting with the hydrogen bond. So this hydrogen bond
Obviously you would know कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इनसाइड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट, हाइड्रोजन जरूर होगा वहां पे. सो हाउ डज अ हाइड्रोजन बॉन्ड लुक लाइक, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा दिखता है, लेट अस क्विकली सी. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो आपको मैंने दिखाया है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन. सो दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, यू कैन सी इट. So these are two water molecules. Between the two water molecules, I have drawn a dotted line. ये जो बनाया हुआ है, this is a dotted line. So you can see that oxygen of this water molecule is getting connected with hydrogen of this water molecule by a dotted line, and this dotted line is referred to as hydrogen bond. Remember, यहाँ पर भी this is also oxygen, this is also hydrogen, but this bond is referred to as covalent bond. In yesterday's class, we had discussed that this bond is covalent bond. To be more precise, it was called as polar covalent bond. But when one water molecule is getting connected with another water molecule, then this bond between oxygen and hydrogen is called as hydrogen bond. I will talk more about it. So when do we call a hydrogen bond, or is hydrogen bond only present in water, or it can be present in other molecules also? तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, this is the depiction of a hydrogen bond. Over here, this is oxygen. Oxygen is highly electronegative, you know that. Oxygen is connected with hydrogen. ये वाला ये दिखाया जा रहा है, this is oxygen, this is hydrogen, and the bond is called as covalent bond. Then there is dotted line, this is called as the hydrogen bond, and then there is oxygen. Remember, oxygen is electronegative, all right, but it is also having lone pairs. इसके पास lone pair भी होते हैं. This oxygen also has lone pair. So अगर मैं if I want to depict a general structure of hydrogen bond, what I can do, there will be a X. X means very electronegative atom. It can be oxygen, very electronegative atom. Over here, in case of water, it is oxygen. To the very electronegative atom, there is connected hydrogen. Between them, X and H, there is a covalent bond. And this hydrogen is connected with dotted line to another atom. We can call it Y. It can be any atom, but we are calling it Y. For example, in case of water, it is oxygen only. Remember, this Y will be electronegative as well as it can have lone pair. तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो it has the tendency to pull electrons towards itself. This bond, dotted line bond, is called as hydrogen bond. अब सर, when will the hydrogen bond form? Can it form always? क्या हमेशा बन सकता है? नहीं, हमेशा नहीं बन सकता. It cannot form always. There is a particular condition where hydrogen bond can form. क्या condition है? It can form only when the electronegativity difference is greater than or equal to 0.9. Now you would ask me, sir, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया. I did not understand this. Let us talk about this. I said that hydrogen bond can only form when the electronegativity difference between the two atoms involved is greater than or equal to 0.9. Now you can ask me, sir, which two atoms are involved? Obviously, one atom would be hydrogen. जैसे यहाँ पे one atom would be hydrogen. Over here, another atom is oxygen. So when will the hydrogen bond form? How can we identify or how can we guess?
by finding out the electronegativities, yeah, by analyzing the electronegativity difference. In yesterday's class also I told you that I will be giving you the electronegativity values of certain atoms. For example, fluorine has electronegativity of 4.0. It is the most electronegative atom that you will ever come across. So this was one question that was asked in GATE examination very uh, around 2015. Which atom is the most electronegative atom? So FClO2 and N3, these were the options. So remember, fluorine is the most electronegative atom. Why? Because the electronegativity of fluorine is 4.0 highest. After F, there is oxygen and then there is nitrogen. So this is the electronegativity difference or electronegativity values. Now, if I want to ask you that whether a hydrogen bond can form between fluorine and hydrogen, sir, what do you mean by fluorine and hydrogen? जैसे कि if this is hydrogen and यहाँ पे in place of oxygen I write fluorine or I write nitrogen or I write chlorine or I write carbon. So whether the hydrogen bond will form or not, this is what we are guessing. तो hydrogen तो रहेगा. This can be anything else, but we are talking about these two atoms. एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? What is the second? It can be we have to find out that whether the hydrogen bond will form or not. So if one atom is fluorine and other is hydrogen, let us find out the electronegativity difference. 4.0 minus 2.1, it is 1.9. So I told you hydrogen bond can form if electronegativity difference is greater than 0.9. So obviously 1.9 is greater than 0.9. So hydrogen bond can form. Similarly, if I keep oxygen, oxygen electronegativity is 3.5. Hydrogen is 2.1. Difference is 1.4. Can hydrogen bond form? Yes. Similarly, if I keep nitrogen 3.0, hydrogen 2.1, electronegativity 0.9, will the hydrogen bond form? Yes. Why? I said that it should be 0.9 or above. या तो 0.9 हो या उससे ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा otherwise it will not form. Sir, in what cases hydrogen bond will not form? Let us see. If in place of this oxygen, I keep carbon, I keep any other atom, carbon रखा, 2.5 electronegativity, hydrogen 2.1, calculate the difference 0.4. Will the hydrogen bond form? No. Let us keep hydrogen and hydrogen. That means over here, I am putting another hydrogen. Can this hydrogen bond form? No. Why? Because the electronegativity difference will become zero. So it will not form, cannot form. जल्दी से सभी लोग मुझे यहाँ तक बताइए. Did you all understand up till here? When will hydrogen bond form and when will it not form? Clear? कोई confusion तो नहीं है यहाँ तक? Good. चलो. Next. When we talk about hydrogen bonds, there are very, very important characteristic related to it. जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ते हो तो उससे जुड़ी हुई बहुत जरूरी जानकारियां पता होनी चाहिए. एक क्वेश्चन आया हुआ है. वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CSIR नेट अराउंड 2019, 2019 के आसपास का क्वेश्चन है. विच बॉन्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ? धरती पे लाइफ मौजूद करने के लिए कौन सा बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है? So the correct answer over here is hydrogen bond. But why do you think hydrogen bond is most important? एक बात है, this is understand this, that if hydrogen bond was not present between two water molecules, then water would not have been present in the liquid state. क्या कहा मैंने? I said that if this hydrogen bond was not present
बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना होता, देन वाटर वुड नॉट हैव बीन प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। पानी लिक्विड स्टेट में नहीं होता, तब किस स्टेट में होता? What state would have water been present? In gaseous state. So how can you say that कि hydrogen bond is essential for keeping water in gaseous state? Pranami, do you want to ask something? What you did not understand? Nitya, क्या नहीं समझ में आया? So previously you were that you were talking about the topic and your voice wasn't audible. So I understood half and I didn't understand the half. What was the exact thing that you did not understand? So you were talking about electronegativity and then you said that we are moving on to the next topic. So I just said that something in the middle. electronegativity difference should be greater than 1.9 or sorry 0.9, or it should be equal to it. जब तक if the electronegativity difference is less than 0.9, the hydrogen bond will not be formed. If it is greater than or equal to 0.9, only then the hydrogen bond will be formed. This is the only thing that I explained earlier. Then I moved on to this, that what is the most important bond to sustain life on Earth? So hydrogen bond is the most important bond to sustain life on Earth. Why hydrogen bond is the most important bond? Let me just quickly go through it. Because if the hydrogen bond is not present between the two water molecules, the water will not be present in the liquid state. Water will convert into gaseous state अगर ये hydrogen bond नहीं होगा तो. If hydrogen bond is not present, water will convert into gaseous state. So why are you saying that water will convert into gaseous state? Let us take the example of H2S gas. ये है H2S. ये है H2S. There is no hydrogen bond present between two H2S molecules. कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है यहाँ पे. There can be no hydrogen bond present. Why? Because the electronegativity difference between S and H is not greater than or equal to 0.9, जिसकी वजह से there is no hydrogen bond present, and obviously H2S becomes gaseous. H2S क्या हो जाएगा? Gaseous form में present हो जाएगा. It will be converted into gases. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, आई बिलीव. तो हाँ अंश जी पूछिए. सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि वाटर में O और H में तो कोवलेंट बॉन्ड होता है और फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो पहले कोवलेंट बना फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ना, तो इस हिसाब से तो कोवलेंट बॉन्ड भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए. पर मेरा जो पर्सपेक्टिव है इसको ये सोचने का है कि जो डीएनए आरएनए है उसमें जो बेसिस में पेयरिंग होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो लाइफ के पर्सपेक्टिव में वो रीजनिंग ज्यादा बेटर नहीं रहेगी? आपको नहीं लगता कि लाइफ कहाँ फॉर्म हुई थी? यस सर, वो मैं समझ गया, पर उससे पहले सबसे लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए प्रीबायोटिक सूप की जरूरत थी. यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट याद है आपको? यस सर, एवोल्यूशन में पढ़ा था, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो रीजनिंग ठीक है बिल्कुल कि लाइफ की शुरुआत पानी में हुई, पर पानी बनने से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से पहले तो कोवलेंट बना था, फिर उस हिसाब से तो कोवलेंट भी इम्पोर्टेंट अगर होना मुझे चाहिए. मुझे ये बता दीजिए कि कोवेलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर पानी, ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट सेपरेट बन गए, लेकिन उनको कनेक्ट करने के लिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आपका यस सर. वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया, जैसे H2S तो बना है, H2S का एक मॉलिक्यूल बना है, ये सेपरेट मॉलिक्यूल है बहुत सारे H2S के मॉलिक्यूल्स, बट क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं है. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो प्रीबायोटिक सूप का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, उसके ऊपर लाइफ आएगी ही नहीं. भाई धरती तो थी ही पहले भी. पानी जब उसमें इकट्ठा होना शुरू हुआ तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स डेवलप होने शुरू हुए. तब जा करके हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं. आप न्यूक्लियोटाइड की बात, न्यूक्लियोटाइड बहुत बाद में आया है कि नहीं, जो आप हेरिडिटी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं या जो डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं. एनीवेज,
तो एक चीज करते हैं कि क्योंकि हम अगर बीच में डिस्कस करेंगे ये चीजों को तो आई थिंक हम जितना मैंने सोचा है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. सो जिसको भी प्रॉब्लम है, whoever has any questions, they can stay back after the class और फिर हम लोग अच्छे से लंबा डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है ना? So that everyone else does not get disturbed. So we can finish off the class and उसके बाद आप रुकिए and then we can discuss. ठीक है? At length, जिसको भी कोई इशू है. So first of all, what I want to talk and then we can discuss. चलिए, so this was about hydrogen bond. Now let us talk about another very important concept that has been asked in your examination. Intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्रॉम द नेम ओनली इट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर. इंटरमोलिक्यूलर मींस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. जैसे कि दिस इज वाटर एंड दिस इज वाटर. There is hydrogen bond between two water molecules. This is called as intermolecular hydrogen bond. इससे क्या होता है? Whenever you see intermolecular hydrogen bond, you can understand that there will be high boiling point. Intermolecular hydrogen bonding increases the boiling point of that compound. Similarly, it also increases the surface tension. If you take the example of having a very high boiling point, 100 degrees centigrade, it also has a very high surface tension. So याद रखिएगा, intermolecular hydrogen bonding increases boiling point, increases surface tension. What about intramolecular hydrogen bonding? Sir, what do you mean by intramolecular? That means in the same molecule, the molecule is same, and in the molecule only, in one molecule only, it's not between two different molecules. In the same molecule, hydrogen bonding is seen. आप बोलोगे कोई example? So look at this. This is salicylic acid. Is salicylic acid. You have OH and you have COOH. This. So this oxygen and this hydrogen, they are in hydrogen bonding. And because of this, since this is in the same molecule, salicylic acid presents some different kind of properties. So whenever hydrogen bond is in the same molecule, it shows reduced water solubility. Salicylic acid पानी में soluble कम होता है. It shows reduced water solubility. Additionally, it increases stability. अब inside one molecule there is hydrogen bonding, तो obviously stability बढ़ जाती है. So this is an important aspect related to intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. ये बात याद रखिएगा. Question on salicylic acid has been asked in the past examination. This is important. Now, another very, very, very important point, and this has again been asked in your GATE as well as CSIR examination. Important मैं mark कर रहा हूँ, and I have also put it inside the rectangular box. अभी आगे there will be in the notes many things I will be writing inside the rectangular box. Consider it important. चलो जरा देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. डीएनए बेस स्टैकिंग की बात कर रहा हूँ. We all know that inside the DNA, let me just quickly draw a DNA molecule over here. So we know that hydrogen bonds are present between the bases like this. Adenine और थाइमीन के बीच में there are two hydrogen bonds. Guanine and cytosine के बीच में there are three hydrogen bonds. We know that. So obviously hydrogen bond, जैसे अभी आपके बैचमेट बोल रहे थे कि hydrogen bonds are present in the DNA. Obviously it is present inside the DNA. And because of the presence of hydrogen bond, DNA gains stability. अब आप पूछोगे कि सर, you were saying that hydrogen bonds are weak bonds. Why doesn't the DNA fall apart? DNA टूट क्यों नहीं जाता? Because I said that hydrogen bond is a weak bond
तो डीएनए शुड फॉल अपार्ट जैसे ही इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल हैज वाटर. सो डीएनए जब पानी में होगा, या डीएनए की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है? व्हाई इज डीएनए सो मच स्टेबल? First thing is because of the hydrogen bonds. Now you will counter ask me that if hydrogen bond is weak, why are you saying DNA has stability? There is not one single hydrogen bond in the DNA. DNA has billions of hydrogen bonds. So one hydrogen bond is weak. But when you are combining so many hydrogen bonds together, billions and millions of hydrogen bonds, the combined strength becomes very, very high. इसीलिए डीएनए बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है. दिस इज व्हाई डीएनए इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, व्हाई इज डीएनए स्टेबल? एक और इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज ऑफ द डीएनए बेस स्टैकिंग. दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द डेफिनेशन ऑफ डीएनए बेस स्टैकिंग एंड देन आई विल शो इट टू यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ध्यान से सुनिए. DNA base stacking is an attractive non-covalent interaction. याद रखिएगा क्या है? Non-covalent interaction between adjacent vertically stacked nitrogenous bases within a DNA or RNA strand. It is the primary driving force that stabilizes the three-dimensional structure of DNA double helix, even more so than the horizontal hydrogen bonds between the complementary base pairs. जो recent research है, it says that the base stacking is more of a contributing factor to the stability of DNA than the hydrogen bond. यानी कि जो बेस स्टैकिंग है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है डीएनए की स्टेबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्ड से. Base stacking contributes more to the stability of the DNA than the hydrogen bond. Sir, what can you show the example? Can you show the diagrammatic representation? Stacking का मतलब क्या होता है? For example, let me show it to you. You might have ironed your clothes. कभी आपने कपड़े अपने आयरन किए हो and you keep the iron clothes one above other. फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, like this. This is called as stacking or making a stack. So for example, let us say that this is one cloth. I have put another cloth over it. Then will be another cloth. There will be another cloth. The same thing happens in case of the nitrogenous bases. यहाँ पे जरा देखते हैं. Let me just zoom this DNA portion. This is a DNA portion. This is a DNA molecule. I'm just zooming it. इसने portion को zoom कर. So this was guanine. This was cytosine. This is adenine. This is thymine. There are three bonds between guanine and cytosine, two bonds between adenine and thymine. Now you can see that the bases just are present one above the other. So guanine is having van der Waal interaction, or there is hydrophobic interaction and van der Waal interaction both. This is called as stacking, one above the other bases, and they start interacting with each other vertically. ऐसे vertical basis पे interact कर रहे हैं. Because of this, the stability of DNA becomes more. So what contributes to base stacking? जब हम base stacking बोलते हैं तो what are the contributing factors? Hydrophobic effect, water hating, मतलब the bases, nitrogenous bases do not want to interact with water. They are comfortable in interacting with one another. तो वो आपस में interaction करते हैं. They start interacting with each other. तो एक तो they are interacting sideways between the two nitrogenous bases, and they are also interacting vertically like this. ये green lines. So base stacking is contributed by hydrophobic effect and London dispersive forces or pi stacking. I will be talking about both of them as we progress. ठीक, ये तो इतनी बात होगी. Which is more stronger? अच्छा कोई पूछे which is more stronger, hydrogen bond or covalent bond? Obviously covalent bond is more stronger than hydrogen bond, no doubt. But when we are talking about DNA molecules where millions or billions of hydrogen bonds are present, obviously it can contribute to stability.
क्या इतनी बात समझ में आई? अगर कोई पूछे, इफ समवन आस्क्स यू कि हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन फॉर्म, कितने मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं इन एनी गिवन मॉलिक्यूल, तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस. Maximum possible hydrogen bonds is equals to number of donor hydrogens plus number of acceptor lone pairs. कितने नंबर ऑफ डोनर हाइड्रोजन्स हैं और कितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर लोन पेयर्स हैं. क्या कहना चाहते हो सर? सर व्हाट डू यू मीन बाय डोनर हाइड्रोजन्स? डोनर हाइड्रोजन मीन्स दोज components that can donate hydrogen. जैसे कि आई शोड यू इन द प्रीवियस डायग्राम, यहाँ पे देखते हैं, दिस OH is a donor hydrogen. It can donate hydrogen. Donate to what? किसमें donate कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में. It is donating hydrogen to form a hydrogen bond. So OH is a hydrogen bond donor. यही चीज हम आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. I'm just showing you over here. So what are the donors? Donors of hydrogen bond. OH, NH, NH2, FH. They will always be having H attached to them. वहीं एक्सेप्टर की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टर, दे विल नॉट हैव अ हाइड्रोजन अटैच्ड टू देम एंड दे विल हैव अ लोन पेयर. इनके पास लोन पेयर होगा. दे विल हैव लोन पेयर एंड थ्रू दैट लोन पेयर दे विल बी पुलिंग the hydrogen towards themselves and this will be forming the hydrogen bond. So what are the acceptors? Oxygen, fluorine, nitrogen. Remember, I'm just writing O, F and N. I'm not writing H. Sir, how can we calculate the maximum number of hydrogen bonds? Water में पूछा गया है. This question has been asked in water. So if the structure of water has been given to you, can you tell me what if the structure of hydrogen has been, if the structure of water has been given to you, can you tell me what would be the maximum number of hydrogen bonds? Yes, we can tell. I told you that the formula is number of donor hydrogens. तो यहाँ पे donor hydrogen कितने? How many donor hydrogens? This is one OH, another OH, two OH are present. ये एक OH है या एक OH, या आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. तो ये वन हाइड्रोजन, ये अनदर हाइड्रोजन, प्लस हाउ मेनी एक्सेप्टर लोन पेयर्स आर प्रेजेंट. कितने एक्सेप्टर लोन पेयर्स है? वन लोन पेयर, अनदर लोन पेयर. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैक्सिमम, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए कंफ्यूजन में, नंबर ऑफ मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड वुड बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर. टोटल मिलाकर के कितना हो गया? टोटल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए. तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद वाटर. सो दिस इज 1, 2, 3, 4. So total 4 hydrogen bonds can be formed in water. Maximum, maximum 4 hydrogen bonds can be formed with water. Similarly, can you tell me, अगर मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, yes, if I'm not giving you anything, then uh, Zina and Bhavatrini Giri, you can ask questions after we complete the material. You can stay back and ask questions after that. If I am saying, can you tell me how many hydrogen bonds would be seen in case of maximum hydrogen bonds can be seen in case of ammonia NH3? Just answer. How many hydrogen bonds can be seen in case of ammonia NH3?
Yes, many students are asking that, saying that it should be 4. Okay, कैसे 4 हो सकता है? Let us see that how it can be 4. Okay, let us come back and see how it can be 4. So when we are talking about ammonia, NH3, N over here is connected with 3 hydrogens, 1, 2, and 3. So these 3 shall be counted, and how many lone pairs are present on nitrogen? Only 1. Because atomic number of nitrogen is 7. So 2, comma 5, 3 hydrogens are present. It is having 1 lone pair. So obviously the total number of hydrogen bonds will be 4. Okay. So these are the two examples that you can remember. Next, let us talk about the nature of hydrogen bond. What is the nature of hydrogen bond? Whether it is electrostatic in nature, whether it is covalent in nature, what type of nature a hydrogen bond has. Nature of hydrogen bond के लिए it is primarily electrostatic in nature. That means ionic nature का होता है. Primarily it is ionic in nature. Very important point. But in certain cases, due to orbital overlapping, what do you mean by orbital overlapping? छोटे classes में in smaller classes you might have studied that about orbitals. So because of the orbital overlapping, partial covariant character can be seen. बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. You do not need to go in a lot of detail. Just understand that the primary characteristic is ionic, and because of orbital overlapping, partial covalent character might be seen. Now, strength of hydrogen bond. What factors, on what factors the strength of hydrogen bond is dependent? सबसे पहला, electronegativity difference. That means I told you that hydrogen bond will be formed between one atom, that is fixed hydrogen, and the other atom, that can be fluorine, oxygen or nitrogen. Remember, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा इन्हीं तीन के साथ बनता है, एफ ओ या एन. व्हाई? बिकॉज only F, O or N have very high electronegativities, and difference between the electronegativities of F, O and N with hydrogen is greater than or equal to 0.9. इसीलिए for forming a hydrogen bond you require F, O या N. तो कहने का मतलब the electronegativity difference contributes to the strength of hydrogen bond. Agar if the electronegativity difference is very high, hydrogen bond will be very strong. If the difference is less, hydrogen bond will be less stable. So it depends upon the electronegativity difference. Higher electronegativity difference, strength will be higher. Directly proportional relation. Next, collinearity. What do you mean by collinearity? Hydrogen bonds can be oriented in different manners. जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन, दिस इज अ डोनर हाइड्रोजन OH, and यहाँ पे you can see oxygen having the lone pair. It is not collinear. Collinear कब होता? ऐसे. That means the donor hydrogen and the acceptor hydrogen, they are in the same line. Over here, they are showing bent nature. Logically, आपको क्या लगता है? Which one amongst them would be more stable? कोलिनियर वाला ज्यादा स्टेबल होगा या बेंट वाला ज्यादा स्टेबल होगा? Which one will have more stability? Collinear would be more stable or bent will be more stable? हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी
या हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन डोनर एटम, hydrogen atom and acceptor atom are nearly collinear. When they will be collinear, that means donor atom oxygen है, hydrogen and the acceptor, ये तीनों they are in the same line, they are collinear, एक ही line में है, then maximum interaction will be seen in the hydrogen bond. Maximum interaction between the acceptor lone pair and the donor hydrogen will be seen. तो जब कोलिनियर होगा, when it will be collinear, maximum interaction of the hydrogen or maximum interaction between the donor hydrogen and acceptor will be seen and therefore stability will be higher. तो कोलिनियर होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बेंट में स्टेबिलिटी कम होगी. Please close your mic. Next, nature of solvent. तीसरा property, the third property, the first property was, or the first contributing factor for the hydrogen bond stability was electronegativity difference. Second property was the collinearity. The third property is nature of solvent. तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, हाउ स्ट्रॉन्ग विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द solvent in which the hydrogen bond is present. If the solvent is polar, then, or if the solvent is non-polar, in दोनों में there will be difference in the hydrogen bond. अगर polar solvent है तो poles are already present inside the solvent. अगर कोई polar solvent ले लीजिए, polar solvent means there are poles that are present in that solvent. For example, water. Water is a polar solvent because one is oxygen and the other one is hydrogen. Oxygen is partial negative, hydrogen is partial positive. So it is a polar solvent, water. If I am putting a molecule having hydrogen bond inside water, then competing hydrogen bonds will be present between donors and acceptors. कहने का मतलब क्या हो गया, if this is the hydrogen bond that I am talking about, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूं, दिस इज फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. सो मान लीजिए ये एक हमने कंपाउंड लिया एंड आई एम पुटिंग दिस कंपाउंड इनसाइड वाटर. वाटर इटसेल्फ इज पोलर, पानी खुद में पोलर है, एंड दिस इज ऑल्सो पोलर. ये भी अगर हमारा दिस FHF, दिस ये भी पोलर है, या ये इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो व्हाट विल हैपन, ऑलरेडी पोल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द पोलर सॉल्वेंट, partial charges are already present. So the hydrogen bond in the water molecule will be competing with the hydrogen bond present over here. इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगेगा. Water hydrogen bonds present in the water will start competing with the hydrogen bond present in this compound, because of which the hydrogen bond inside a polar solvent will be weakened. It will be weak. When there is non-polar solvent means जैसे benzene हो गया. Benzene does not have poles like water. If you are putting a hydrogen bond containing compound inside benzene, benzene does not have poles, or benzene does not have hydrogen bonds, or benzene does not have partial charges. It will not oppose or it will not conflict with the hydrogen bond that is present in the molecule. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो याद रखने वाली बात है, hydrogen bond strength is more in non-polar solvent and it is less in polar solvent.
अगर कुछ भी नहीं याद है तो बस इतनी पॉइंट याद रख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्टेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट देन इट इज इन द पोलर सॉल्वेंट. नेक्स्ट, वैंडर वाल्स बॉन्ड. Van der Waals interaction or Van der Waals bond is the last type or second last type of bond that we are studying. It is also a weak bond and it shows intermolecular electrostatic interaction. Intermolecular means between two molecules. Electrostatic means charges are involved. So intermolecular electrostatic interaction. It can form in both polar and non-polar conditions. ये पोलर में भी बन सकता है कंडीशन में, नॉन पोलर भी बन सकता है. एक जो सबसे खास बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज बीन आस्क्ड इज वैन डर वाल्स बॉन्ड कैन बी अट्रैक्टिव एंड कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो. दोनों हो सकता है. इट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स ऑल्सो, इट कैन बी रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो. There are three types of van der Waals interaction. सबसे पहला interaction, dipole-dipole interaction. So I am talking about van der Waal interaction, and in the van der Waal interaction, the first type of interaction that I am talking about is dipole-dipole interaction. It is also called as Keesum interaction. Dipole-dipole interaction को ही Keesum interaction भी बोलते हैं. It occurs between two permanent dipoles. अगर दो permanent dipoles, what do you mean by permanent dipoles? अब suppose I'm showing it to you. This is, let us consider one dipole. Sir, what is a dipole? Dipole is a molecule that is having two poles. One is negative pole and one is positive pole. तो ये एक dipole है. Similarly, this is another dipole. One is positive pole, one is negative pole. तो this already is a dipole. ये पहले से ही, this is a permanent dipole. ये पहले से ही एक dipole characteristic show कर रहा है. This is another dipole. When both the dipoles are oriented in such a way that same poles are present close to each other, so what will be the interaction over here? It will be repulsive. Similarly, यहाँ पे अगर देखें तो this is also a permanent dipole, this is also a permanent dipole, this is a negative pole, this is a positive pole. In these two dipoles are oriented in such a way जहाँ पे both the poles are opposite in nature. So over here attraction will be seen. So remember, dipole-dipole interaction, also called as Keesum interaction, can be attractive and can be repulsive. Additionally, it happens between two permanent dipoles, जो पहले से ही dipole nature शो कर रहे हैं, उनके बीच में interaction होता है. Van der Waals interaction, बस इतना ही समझना है. Second type of van der Waal interaction is dipole-induced dipole interaction. What do you mean by dipole-induced dipole interaction? This means that one dipole is permanent and this permanent dipole is introducing dipole-like characteristic in another molecule. तो ये एक permanent dipole है. This is another molecule that was initially not a dipole. Initially dipole नहीं था, but इसके नजदीक आने से, with coming close to this dipole, this molecule also became a dipole. And always remember that when this molecule will become a dipole, the polarity will be opposite. That means if this is negative, this portion will become positive. And if this portion becomes positive, this portion will become negative. तो कैसा हुआ? This portion was negative, तो ये positive बन गया. So what will be the nature between these two? Attractive. So dipole-induced dipole interaction, also called as Debye interaction, will always be attractive in nature. Simple. इससे ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें. Next.
induced dipole interaction, यानी कि both the molecules were initially not dipoles, but because of some changes in the electronic distribution they both became dipoles. इसीलिए इसको induced dipole interaction भी बोलते हैं. They are also called as London dispersive forces, and these are extremely weak and attractive in nature. कौन मुझे बताएगा कि before this, beta, I am Nivi, I am saying that when I was talking about the stability of hydrogen bond, in that respect, I said that hydrogen bond is more stable in non-polar solvents. इसीलिए तो water is a universal solvent, because water breaks the hydrogen bonds. Whatever hydrogen bonds are present, it will break it. इसीलिए molecules tend to dissolve in water. Permanent dipole, जैसे कि example हो गया water molecule. Permanent dipole means where already negative and positive poles are present. Permanent पहले से ही present है. Induction नहीं हुआ. They are not induced. पहले मुझे एक चीज बता दीजिए, जस्ट मुझे एक चीज बताइए. अभी अभी इससे पहले वी हैड समवेयर स्टडीड अबाउट लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस, और हमने बात की थी लंदन वैंडरवाल्स फोर्सेस. वेयर डिड वी टॉक अबाउट दिस टर्म? इससे पीछे अभी कहीं बात की है? यस, डीएनए बेस स्टैकिंग, वेरी गुड. वी टॉक्ड अबाउट इट इन डीएनए स्टैकिंग. तो पाई पाई स्टैकिंग बोल रहे थे, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस. ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट करोगे अगर आप, तो आप अच्छे से समझ सकते हो. बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इन वैंडरवाल्स फोर्सेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन वैंडरवाल्स इज विच फोर्स, ऐसा क्वेश्चन आया था, विच फोर्स इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, विच फोर्स अमंग्स द फॉलोइंग इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. तो वैंडर वॉल फोर्सेस कैन चेंज फ्रॉम अट्रैक्टिव टू रिपल्सिव. याद रखिएगा, वैंडर वॉल्स फोर्सेस जो होते हैं वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं. इफ टू एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर दे विल शो रिपल्सिव नेचर. इफ टू एटम्स आर लिटिल फार एट ऑप्टिमम डिस्टेंस दे विल शो अट्रैक्शन. और अगर और दूर हो गए देयर विल बी नो इफेक्ट. दैट मीन्स वैंडर वॉल्स फोर्सेस शो और आर डिस्टेंस डिपेंडेंट. तो ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. वैंडर वॉल्स इंटरैक्शन आर डिस्टेंस डिपेंडेंट. एट लार्ज डिस्टेंसेस इंटरैक्शन इज नेग्लिजिबल. दो एटम है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत दूर है, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर विल बी नेग्लिजिबल इंटरैक्शन. एट ऑप्टिमल डिस्टेंसेस, थोड़ा सा नजदीक है, दिस इज द ऑप्टिमल डिस्टेंस, द attractive forces will be seen. And at very short distances, the atoms are coming very very close to each other, electron cloud will start overlapping and repulsion will be seen. इसके लिए एक equation है, Leonard Jones equation, but you do not have to remember this. I have just written it for the sake of you to remember that Leonard Jones equation tells us about the van der Waals force. A upon r to the power 12 upon a minus b upon r to the power 6. इसमें ये जो फैक्टर है this shows attraction, and ये जो फैक्टर है this shows repulsion, but you do not need to worry about that. ये याद करने की जरूरत नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये this is important. Now coming to the last type of bonding, this is called as hydrophobic interaction. Very 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 important with respect to protein folding. अभी आगे पढ़ेंगे when we will be studying or when we will be going to the proteins, so वहां पढ़ना पड़ेगा protein folding के लिए which type of bond is important. तो hydrophobic interaction, चलो देखते हैं. Hydrophobic interaction describes the forces
that cause non-polar substances to cluster together to minimize contact with water. Let me give you an example. एक example से समझते हैं. एक पानी का, let us take a glass of water. This is a glass. Fill water inside the glass. Put one oil drop inside that water. The oil drop will start floating on the water. It will not solubilize. Why? Because as someone said correctly, that like dissolves like. So water is polar, oil is non-polar. So they will not be solubilizing each other. So oil droplet will be floating on water. What if I put another 5 or 6 drops in water and then I swirl water little bit? पानी के अंदर 5-6 बूंदे ऑयल की और डाली और उसको ऐसे मिला लिया. What will happen? Oil droplets will start to aggregate with each other. Oil की drops आपस में जुड़ जाएंगी. जो पहले अलग अलग थी वो आपस में जुड़ जाएंगी. Why so? You might have seen in Bollywood movies कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. One oil droplet is there. It does not want to interact with water. Another oil droplet is there. It also does not want to interact with water. Another oil droplet, it also not does not want to interact with water. So what do they decide? They start interacting with each other. They start aggregating with each other. This happens because of hydrophobic interactions. That means oil has a hydrophobic nature. It does not want to mix with water. So it starts interacting with similar kind of molecules like other oil droplets. इसको बोलते हैं hydrophobic interaction. This is what I have written over here. यहाँ पे describes the forces that cause non-polar substances. Non-polar means oil. Non-polar substances to cluster together. Oil droplets cluster together to minimize contact with water. एक बहुत खास बात जो याद रखनी है, it plays a very important role in protein folding and cell membrane formation. When we will be talking about proteins, the protein folding के समय में we will be discussing about hydrophobic interaction again. And जब cell biology पढ़ रहे होंगे, then also you will understand कि how does hydrophobic interaction help to form the cell membrane. तो याद रखिएगा अभी के लिए, for now, since I cannot talk about protein folding now, इसीलिए अभी के लिए दिमाग में रखना है, just keep it in your mind that protein folding occurs due to hydrophobic interaction. One point I can give you that proteins inside the cell, water is present inside the cell, right? So when the protein is coming inside, protein is formed inside the cell, obviously protein has many amino acids that are hydrophobic. So they will try to interact within themselves rather than interacting with the water. So it will start interacting with each other. The amino acids will start interacting with one another. And this is hydrophobic interaction. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए गेट के एग्जाम में. The following type of interaction is mainly responsible for aggregating of proteins in dilute solutions. तो बताइए, what should be the answer? Yes, the correct answer is B. So this is the question that has been asked in your examination. Gate I think 2016 और 17 में आया था. एक बात और बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, और जो जो लोग केमिस्ट्री से मेजर्स कर रहे होते हैं, people who are doing chemistry majors, they also do not understand this. समझिएगा ना. आपने बचपन में पढ़ा होगा, you might have studied in your earlier classes that इंडिया में 7 बज गया है ना, एक बार कंफर्म करिए प्लीज. 7 बजा है आपके यहाँ? 7? हाँ ठीक. तो what I'm trying to say is कि yes, हाँ. आपने पहले पढ़ा होगा in your basic classes, you might have studied that in the universe entropy is increasing, है ना. यूनिवर्स में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, the processes that are occurring
because of them entropy is continuously increasing. या कह सकते हैं कि for spontaneous reactions, entropy increases. When we will be studying about the metabolism or Gibbs free energy, then I will be giving you a perspective of that also. But सभी लोगों को, all of you would be knowing that entropy tends to increase in spontaneous processes. यहाँ पे अगर हम देखें, let us see, let us consider this is one oil molecule. ये oil है, ये भी oil है. I am showing you real time what happens when two oil droplets combine together. होता क्या है, when you put one oil droplet inside water, what happens is water molecules tend to form a cage-like structure around this oil. यहाँ पे केज बना के नहीं दिखाया है, it's not showing actually the cage structure, but understand this that water molecules will surround the oil completely और एक रेगुलर स्ट्रक्चर बना लेता है. ठीक है. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एन ऑयल ड्रॉपलेट. इसके आसपास भी देयर इज अ रेगुलर केज लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. अब आप सोचोगे कि सर रेगुलर स्ट्रक्चर अगर बन रहा है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो दिस विल कॉज अ डिक्रीज इन द एंट्रोपी. एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज रैंडमनेस. तो रैंडमनेस इंक्रीजेज एंट्रोपी. बट यहां पे क्या हो रहा है? अ केज लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स. दैट मींस एक रेगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्म. सो ये तो एंट्रोपी के रूल का वायोलेशन लगेगा नहीं. बट जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट्स और आ रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग? The cage-like structure of water molecule tends to break down. कैसे? यहाँ पे देखिए, these two oil molecules they will combine and जो यहाँ पे these water molecules that were present or these water molecules that were present over here, they will be removed. That means the cage-like structure break हो जाएगा, and when the cage-like structure is broken, entropy increases. इसीलिए because of the increase in entropy of water molecules, the hydrophobic interactions are formed. यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं. Because of increase in entropy of water molecule, hydrophobic interactions are seen. एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेते, दोबारा से समझते हैं. What did I say? This is an oil droplet. When the oil droplet is put inside water, water will form a cage-like structure surrounding the oil. This is another oil molecule. Around it also water will form. Water will form a cage-like structure. But actually, this cage-like structure is well oriented, is in symmetrical shape. तो दिस विल सजेस्ट दैट कि एंट्रोपी कम हुई है. किसकी? वाटर की. एंट्रोपी घटी है. बट जैसे ही द टू ऑयल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, तो होता क्या है? दिस केज लाइक स्ट्रक्चर इज ब्रोकन. आप देख सकते हो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, दे आर रिलीज. क्योंकि these two oil droplets they combine together, so some of the water molecules are released. H2O molecules released or cage structure broken, जिसकी वजह से when cage structure will be broken, तो जो पहले अभी तक रेगुलर स्ट्रक्चर था, the structure that was previously regular is now broken down and it creates randomness. रैंडमनेस होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी. एंट्रोपी बढ़ेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा. एंड इफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज प्रेजेंट, this randomness is actually causing the oil droplets to join together, or you can say that this randomness or this increase in entropy of water molecules, कह सकते हैं increase in
entropy of water molecules causes hydrophobic interaction. ये कहने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक, चलिए जी, आगे चलते हैं. एंड ये क्वेश्चन जरा बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन इन प्रोटीन. पेप्टाइड नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन कब से हो गया भैया? अभी कल के ही क्लास में पढ़ाया था, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवेलेंट इंटरैक्शन, नॉन कोवेलेंट कैसे बोल दिया? पढ़िए ठीक से भाई, रिवाइज करके आइए क्लास में. सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या हो गया? सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग बट इट इज आयोनिक इंटरैक्शन. सॉल्ट ब्रिज दूसरा नाम है आयोनिक इंटरैक्शन का. तो इवन इफ यू डिड नॉट नो अबाउट सॉल्ट ब्रिज बीइंग कॉल्ड एज आयोनिक, अगर आपको नहीं भी पता था कि सॉल्ट ब्रिज को आयोनिक बोलते हैं, तब भी ये तो पता है डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, दे आर ऑल कोवेलेंट इन नेचर. तो ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रिज नहीं पढ़ा है, तो ये ऑब्वियसली आंसर वो भी सॉल्ट ब्रिज. तो डायरेक्ट क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते, आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा. दिस वाज क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन आईआईएससी बैंगलोर. चलिए, तो दिस कंप्लीट्स द बॉन्डिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. अब थोड़ा सा और बेसिक क्लियर करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री. तो एक दो तीन दिन अभी बेसिक चलेगा एंड देन वी विल मूविंग ऑन टू अमाइनो एसिड्स. तो मोल क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू फेस डिफिकल्टी इन द मोल कॉन्सेप्ट? कितने लोगों को ये नहीं समझ में आता? हाउ मेनी ऑफ यू फेस डिफिकल्टी इन मोल कॉन्सेप्ट? चलो, अच्छे से समझ में आएगा. अब इस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सबसे पहले मोल समझने से पहले आपको पता होगा किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, दीज आर ऑल यूनिट्स. ठीक है. अलग अलग चीज नापने के लिए, फॉर मेजरिंग डिफरेंट थिंग्स, फॉर मेजरिंग वेट वी हैव किलोग्राम और ग्राम, फॉर मेजरिंग डिस्टेंस वी हैव मीटर, किलोमीटर. बट इन केमिस्ट्री इनिशियली कोई ऐसा यूनिट नहीं था. देयर वाज नो यूनिट दैट कुड हैव बीन यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम ऑफ अ गैस. इस तरीके से मेजर करने के लिए देयर वाज नो यूनिट इन केमिस्ट्री. पीपल थॉट ऑफ अ न्यू यूनिट कॉल्ड एज मोल. तो मोल इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट. सर किस चीज का यूनिट है? अगर मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, let me introduce you to the Avogadro number. Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 23. तो कोई भी ऐसी चीज, if I have 6.023 into 10 to the power 23 bricks, ईंटे हैं इतने सारे, तो मैं इसको 1 mole of brick I can say. If I have 6.023 into 10 to the power 23 cycles, I can say 1 mole of cycle. If I have this many atoms, I can call it as 1 mole of atom. If this is the molecules, I can call it 1 mole of molecules. तो एक तो चीज समझ में आ गई कि anything that have 6.023 into 10 to the power 23 number, उसको एक मोल कहेंगे. अगर 6.023 into 10 to the power 23 hairs है हमारे सर पे, then it will be considered as 1 mole hairs. एक तो ये बात क्लियर होगी. दूसरी चीज आपके रेस्पेक्ट में, फॉर बायोकेमिस्ट्री आपको दे सकता है वेट ऑफ एन एलिमेंट. मान लीजिए आपको कह दिया कि आई हैव एन एलिमेंट हुज वेट इज 40 ग्राम. मेरे पास उसका 40 ग्राम मटेरियल है. आई एम हैविंग 40 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड. कैन यू टेल मी हाउ मेनी मोल्स आर देयर
in that weight? Yes, we can calculate. Kaise? If weight of an element has been given to you or weight of something has been given to you, if you know the molecular weight of that element or atomic weight of that element, we can calculate the number of moles. कैसे? अगर weight मान लीजिए 40 ग्राम है एंड एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट इज 20, तो 40/20 कर दिया 2 मोल्स. अगर मान लीजिए किसी चीज का नंबर दे दिया, सपोज दे आर सेइंग दैट आई हैव 20 lakh atoms of hydrogen, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ मोल्स? यस. कैसे? जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, वट एवर नंबर ऑफ एटम्स आई एम हैविंग, 20 lakh डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. So if number of anything has been given to you, number has been given to you, divided by Avogadro number. If weight of that element has been given to you, divided by molecular weight or atomic weight. If volume of the gas has been given to you at STP, standard temperature pressure, divided by 22.4 liters. तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स आपको मोल मिल जाएगा. सो आपके रेस्पेक्ट में, फॉर योर पर्पसेस, फॉर बायोकेमिस्ट्री पर्पसेस, ओनली दीज थ्री कैन बी गिवन. दे कैन गिव यू वेट, दे कैन गिव यू नंबर्स, और दे कैन गिव यू वॉल्यूम ऑफ द गैस. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए. फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, एन दिया हुआ है, N2 नहीं दिया. दे हैव नॉट गिवन यू N2, दे हैव गिवन यू N. तो व्हेन दे हैव रिटन N, व्हाट डज दैट मीन? N अगर सिंगल लिखा हुआ है, इज दिस एन एटम और अ मॉलिक्यूल? एटम है ये. So if 28 ग्राम, दैट मीन्स वेट दिया हुआ है. वेट हैज बीन गिवन. एंड किसका वेट दिया हुआ है? N का. दैट मीन्स एटम का. तो आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय एटॉमिक वेट. किसका एटॉमिक वेट? हुज एटॉमिक वेट? Nitrogen atomic weight. So what is the weight that has been given? 28. What is the atomic weight? 14. Nitrogen का atomic weight 14 होता है. 28 divided by 14 is equals to 2 moles. Similarly, 32 gram of sulfur, S दिया हुआ. S again means atom. Weight has been given. Atomic weight of sulfur कितना होता है? 32. तो weight upon molecular weight या atomic weight, तो 32/32 1 mole. 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है. हाइड्रोजन अगेन दिस इज H लिखा है. H मीन्स एटम. तो 2/1 इज इक्वल्स टू 2 मोल्स. अब यहाँ पे देखो 28 ग्राम ऑफ N2 दिया है. व्हाट डू यू मीन बाय N2? N2 इज अ मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है. देन वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय मॉलिक्यूलर वेट. 28 से डिवाइड किया. प्रीवियसली वी डिवाइडेड बाय 14. व्हाई? बिकॉज N वाज मेंशन्ड. अगर N2 मेंशन्ड है तो 28/28 1 मोल. ग्लूकोज का अगर पूछा जाए तो ग्लूकोज इज 60 ग्राम. 60 ग्राम दिया हुआ है आपको. नाउ यू हैव टू डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, इट इज 180. तो इसको अगर कैलकुलेट करना है C6H12O6, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज? तो कार्बन का 6, 12 होता है कार्बन का एटॉमिक वेट, 12 into 6. हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 into 12. ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 into 6. कैलकुलेट इट, कम आउट टू बी 180. तो 60 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 1/3 मोल्स इज इक्वल टू 0.33 मोल्स. तो इस तरीके की बातें आपको पता होनी चाहिए. वेट से कैलकुलेट करना मोल्स. हाउ कैन यू कैलकुलेट मोल्स फ्रॉम वेट? हाउ कैन यू कैलकुलेट मोल्स फ्रॉम नंबर? हाउ कैन यू कैलकुलेट मोल्स फ्रॉम STP of a gas? We will take the example of gas STP also in just a moment. दूसरी बात, when we will be talking about proteins, अभी जब आगे बढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स पढ़ेंगे, तो वहां पे अक्सर दिया रहता है डाल्टन. तो इट इज द वे टू रिप्रेजेंट द वेट ऑफ अ प्रोटीन. 1 डाल्टन, 2 डाल्टन, 2000 डाल्टन, 1 किलो डाल्टन. So is there any way we can convert Dalton into gram? Yes, this is the conversion. 1 Dalton is equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. याद रखिएगा. Very important conversion.
एंड 1 किलो डाल्टन इज इक्वल्स टू 1000 डाल्टन, ये भी याद रखिएगा। इतनी बात अगर पता है तो वी आर डन विद मोल्स। इससे ज्यादा आपके मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम इज 0.5, क्या पूछ रहे हैं? इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम इज 0.5, दैट मीन्स मोल्स दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का नंबर बताना है। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर? नंबर ऑफ मोल्स हैड बीन गिवन एज 0.5। आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। Yes, very good. So most of you are able to answer it correctly. So they are saying कि if the number of moles of an atom is 0.5, so moles is given as 0.5. And I have said that if they are asking the number of atoms, that means they are asking the number of something. So moles is equals to number of atoms upon Avogadro number. Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 23. You solve it out and it will come out to be something around 3.0 into 10 to the power 23. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, if the number of bases in a DNA molecule is this much, number of bases in the DNA molecule is this much, find the number of moles of DNA molecule. मेघा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लास्ट में रुक करके पूछ लीजिएगा प्लीज। यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू कैन स्टे बैक एंड आस्क योर क्वेरीज लेटर। यही गड़बड़ कर दिया आपने, you did not read the question correctly. See, if I'm saying if the number of bases in a DNA molecule is this much, number of bases DNA molecule में ये दिया, find the number of moles of the DNA molecule पूछा है। I have not asked find the number of moles of the bases, मैंने bases के तो मोल पूछे नहीं आपसे। Did I ask you the number of moles of the bases? No. I asked you the number of moles of DNA molecule. So why are you telling me the number of moles of bases? So there was one DNA molecule. Bases की संख्या इतनी है, the number of bases is this much, but find the number of moles of the DNA molecule. DNA molecule was 1. So 1 upon Na would be the correct answer, 1 by Na. So number of DNA molecules is equals to 1 and Avogadro number is equals to Na. So number upon Avogadro number 1 by Na would be the answer. Now, as I said, we will be dealing with some questions with STP of gas. Find the hydrogen atoms present in 11.2 liter of H2 gas. Calculate करिए. Find the number of hydrogen atoms present in 11.2 liter of H2 gas. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
चलिए देखें, find the hydrogen atoms present in 11.2 liter of H2 gas. So सबसे पहले what has been given to us? Volume of the gas. And I told you if the volume has been given, we can calculate the moles. कैसे? I can divide this volume by 22.4. तो 11.2 divided by 22.4 कितना आ जाएगा? How many number of moles? 0.5. कैसे? So number of moles will be 11.2 upon 22.4 is equals to 1 by 2. That means 0.5 of hydrogen gas. Ab, how many hydrogen atoms are present? They are not asking about the number of molecules. Ab H2 gas लिखा गया है. They have written. So in H2 gas there are two atoms, isn't it? कितने atoms? There are two atoms in the H2 gas. So 0.5 moles into 2 per mole. हर एक molecule में, in one molecule of H2 gas there are two atoms. So 0.5 into 2 moles of hydrogen atom is equals to कितना हो गया total? 1 mole. 1 mole of hydrogen atoms. Yeah, we can also say 6.023 into 10 to the power 23 hydrogen atoms. So, did you all understand why did we multiply with 2 over here? Did you all understand why did we multiply with 2 over here? We multiplied with 2 because in one H2 molecule, in one hydrogen molecule, there are two atoms. Krishna, do you have any questions or did you? If you have any questions, you can stay back. देखिए ध्यान से. Again, I'm explaining it to you क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए. Let me just explain it to you. 11.2 liter of hydrogen gas. I'm just adding up a page so that so अगर मुझसे कहा जा रहा है 11.2 liter of hydrogen gas. So 11.2 liter divided by 22.4 कर दें तो this will give me the number of moles. क्यों? Why? Because I have said that volume of gas at STP अगर दिया है and if you divide it by 22.4 liter it will give you the number of moles. तो इसको सॉल्व करें तो this will give me 0.5. क्या? 0.5 moles. Moles of what? Moles of H2. H2 क्या है? This is molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. पूछ क्या रहा है? They are asking about hydrogen atom. How many hydrogen atoms will be present? अब जरा बताइए 0.5 moles of hydrogen gas का मतलब हो गया there are two atoms over here. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे 0.5 मोल्स ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दोनों अलग अलग हैं. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? अनुपमा जी आपको हाँ जी, चलिए. तो बेटा ये मॉलिक्यूल और एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस लेवल पे, है ना? अगर मैं ये बताने बैठूंगा तो फिर तो बहुत देर लगेगी. चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? सिंपल सी बात है. 8 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो आई विल हैव टू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ऑक्सीजन गैस O2 गैस दिया हुआ है, दैट मींस O2 क्या है? मॉलिक्यूल है. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट विद द मोल्स. तो 8 अपॉन 32 कर दीजिए. दिस विल कम आउट टू बी 1.4. दैट मींस 0.25 मोल्स ऑफ O2 गैस. अब
वॉल्यूम पूछा गया है, तो 0.25 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा? वी नो दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का O2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। 1 मोल ऑफ O2 वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स। तो 0.25 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा? 0.25 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 5.6 लीटर्स आ गया। सबसे पहले क्या किया? जस्ट डिवाइड दिस weight by 32 gram molecular weight, calculate number of moles. 1 mole of oxygen 22.4 liter, तो 0.25 moles की वॉल्यूम कितनी होगी? 5.6 लीटर। अगेन अनदर क्वेश्चन इज number of moles of O3 gas present in 5.6 decimeter cube of O3 gas at STP। यहाँ पे the only thing that is difficult is 5.6 decimeter cube दिया हुआ है। मीटर क्यूब दिया होता तो यू वुड हैव इजीली कैलकुलेटेड। तो देर इज अ कन्वर्जन। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ये कन्वर्जन याद रखिएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 5.6 लीटर। नाउ वी नो द वॉल्यूम ऑफ O3 एट STP, तो 5.6 लीटर। So can we calculate the number of moles? Yes, 5.6 divided by 22.4 is equals to 1 by 4. Correct answer हो गया 1 by 4. To remember, 1 decimeter cube is equals to 1 liter या 1 centimeter cube is equals to 1 ml. So these are two conversions that you have to remember. इस पे जाने से पहले let us first of all solve some questions. आज के कुछ questions को solve करते हैं and फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन इज मोस्ट सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन? बताइए आंसर, जल्दी जल्दी बताते चलिए। Yes, it was dipole-dipole interaction. Correct. Very good. It was dipole-dipole interaction because it can be attractive also, it can be repulsive also. Correct answer is B. Which statement over here is false? ध्यान दीजिएगा, ये लिखा false. In GATE biotechnology and GATE life science, this type of question is often asked, which of the statement is false? And you start searching true statements. So question पढ़ना है. We have to read question properly. Which of the statement over here is false? बताइए. Yes, very good. बहुत बढ़िया guys. Very good. Really happy. CH4 forms hydrogen bond. This is a false statement. CH4 cannot form hydrogen bonds. Hydrophobic interactions are primarily driven by. Yes, very good guys. Really happy. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा. Entropy increase of water. Next question. Which interaction contributes most to the specificity of Watson-Crick base pairing? Base pairing वाला concept अभी बताया था मैंने. बेस पेयरिंग के बारे में पूछ रहा है बेटा, बेस पेयरिंग के बारे में, बेस स्टैकिंग के बारे में नहीं पूछ रहा. इट्स नॉट आस्किंग अबाउट स्टैकिंग, पेयरिंग के बारे में पूछ रहा है ना. ATGC बेस पेयरिंग के बारे में पूछ रहा है. वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग, कंफ्यूज मत हो, दैट वाज बेस स्टैकिंग. तो बेस पेयरिंग में A डबल बॉन्ड, T, G ट्रिपल बॉन्ड, C, ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग D. ये कौन बताएगा? द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सपेक्टेड किस में होगा? वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. इट शुड बी डी. एंड कौन से एस्पेक्ट से हम बोल रहे हैं? व्हाई आर वी सेइंग डी? कैन यू टेल मी, जस्ट राइट डाउन इन शॉर्ट. कौन सा पॉइंट पढ़ा था जिसपे ये क्वेश्चन बन रहा है?
कौन से पॉइंट से? आई जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये क्वेश्चन आए गेट के एग्जाम में, तो ये यू आर एबल टू सॉल्व देम। आई एम रियली हैप्पी कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। ये हो गया। एक और पॉइंट था बट चलो उसको बाद में बता देंगे, क्योंकि टाइम हो गया है ऑलरेडी, और ये बस पेज बताना था। तो आई विल गिव यू दिस पेज इन द नोट्स, बट आई विल टॉक अबाउट दिस, या चलो मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूँ एंड इट विल बी गेट कंप्लीटेड, बस 1 मिनट लगेगा। इफ समवन आस्क्स यू कि बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में कैन यू अरेंज द बॉन्ड्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, यस, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, then comes ionic, then comes metallic, then comes hydrophobic, then comes hydrogen, then comes dipole dipole, and then comes induced dipole. कैसे याद कर सकते हैं सर? अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, अभी कुछ समय पहले कोरोना हुआ था, देयर वाज कोरोना लिटिल वाइल अगो, एंड एवरीवन वाज प्रेइंग टू गॉड कि हमारी जिंदगी बच जाए, वी गेट सेव्ड। तो लेट अस से दैट ऑल ऑफ अस वर प्रेइंग टू गॉड, प्रेइंग टू महादेव की सेव आवर लाइव्स। तो कोवेलेंट का कोव, आयोनिक का इन, कोविन या कोविड कह दो, कोविन में, मेटालिक का एमी, हाइड्रोफोबिक का हर, हाइड्रोजन बॉन्ड का हर, डाइपोल का डी, इंडोल का सॉरी इंड्यूस डाइपोल का वी मान लीजिए। तो कोविन में हर हर महादेव, कोविन में हर हर महादेव। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोविन, कोवोलेंट कोविन में हर हर महादेव, ऐसे याद कर लीजिए। यू विल, अभी गलती नहीं होगी, यू विल नॉट फेल इन दिस, कि आपको सीक्वेंस याद करने के लिए, फॉर रिमेंबरिंग द सीक्वेंस ऑब्वियसली। तो कोविन, कोवेलेंट, देन आयोनिक, एमी, मेटालिक, कोविन में हर, हाइड्रोफोबिक, देन हाइड्रोजन, देन डाइपोल डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। ये वैंडर वॉल्स फोर्सेस है। वैल्यूज कैसे याद कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली इन द बुक यू विल गेट वेरिएबल वैल्यूज, 402.5, 409.6, ऐसे वैल्यूज है। बट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन द एब्सोल्यूट वैल्यूज, याद रखने के लिए आपको आसानी होगी, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट। देखो, कोवेलेंट में किलो जूल पर मोल 400 है, इसका जस्ट आधा कर दीजिए 200 आयनिक, सेम रख लीजिए मेटालिक 200, हाइड्रोफोबिक में अगेन हाफ, हाइड्रोजन बॉन्ड अगेन हाफ, डाइपोल में अगेन हाफ, इंड्यूस डाइपोल में 1/10। तो द ओनली चेंज इज इन मेटालिक एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर से देखते हैं, 400 जस्ट हाफ, 200 आयोनिक, सेम मेटालिक 200, जस्ट हाफ हाइड्रोफोबिक, जस्ट हाफ हाइड्रोजन, जस्ट हाफ डाइपोल डाइपोल, एंड 1/10 इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दिस इज द वैल्यू फॉर किलो जूल पर मोल। इसी को किलो कैलोरी पर मोल में कर दीजिए। यू वांट टू कन्वर्ट इन किलो कैलोरी पर मोल, देयर इज वन कन्वर्जन, 1 calorie is equals to 4.2 joules. If I want to convert it in kilocalorie, I just divide it by roughly 4.2, सबको 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड दिस बाय 4.2, 80, डिवाइड दिस बाय 4.2, रफली 40, फिर 40, फिर 100, ऐसे कर सकते हैं। 80 इसका आ गया, हाफ 40, सेम 40, हाफ 20, हाफ 10, हाफ 5 एंड 1/10 0.5। गिव मी अ थम्स अप गाइस, याद हुआ कि नहीं याद हुआ क्लास में ही सभी लोगों को? तो यू कैन रिमेंबर दिस इन क्लास इटसेल्फ, और सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड। देखो यहाँ पे ये पूछा गया है गेट एग्जामिनेशन में, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कौन बताएगा? दैट मीन पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा एनर्जी, विच बॉन्ड हैज द हाईएस्ट एनर्जी, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम। To understand, covalent bond is highest energy bond. Following this is ionic bond. Following this is hydrogen bond. And following this is van der Waal bond. तो यहाँ पे देख, कोवेलेंट सबसे ज्यादा, फिर आयोनिक, फिर हाइड्रोजन एंड देन वैन डर वाल।
गिव मी अ थम्स अप अगर आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया और क्लास में ही याद हो गया। बताओ बेटा, समझ में आ गया सब कुछ आज के लेक्चर में? गुड, वेरी गुड। अब जिन लोगों को कुछ परेशानी है या प्रॉब्लम है, यू कैन स्टे बैक, अदर गाइस कैन लीव। आप में से जिन लोगों ने अपने ईमेल आईडी आज भेजे हैं, आई विल बी एडिंग इट टू यू, आई विल बी एडिंग यू जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है? Whatever questions you have, you can ask now. Excuse me, sir. I have a question. Just a moment. I'll just quickly close the recording so that ज़्यादा बड़ी ना हो, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।